हेलो गाइस, तो मेरा नाम है आसिम और आज मेरे साथ हैं मोहम्मद सलमान, जो कि मैं इन्हें सलमान भाई कहता हूँ। तो आज इनसे जानते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन इन द यूके फॉर मैनी ईयर्स, तो इनसे जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो कि आजकल, क्योंकि अब काफ़ी लोग यूके आ रहे हैं और जो काफ़ी सालों से यूके में भी हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें जो कि उन्हें हेल्प करेंगी। तो वेलकम वेलकम टू द Thank you, Asim. Thank you for having me at your residence. पहले तो कहना चाहूँगा कि it's been lovely last couple of days. आसिम के घर हमने काफ़ी enjoy करा. Thank you for taking us around, showing your city. So it was beautiful. And where this all started, this conversation is we came to Asim's house and it's such a beautiful apartment, and this is how this conversation about renting started. So we will talk about build to rent and the new trends in the country. तो उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे आसिम। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने जो बात कही है बहुत सही बात कही है, क्योंकि जब मैं भी शुरू में आया था यहाँ पे और जो भी लोग आते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो उन्हें रेंटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर बैक होम, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, सलमान भाई भी ओरिजिनली इंडिया से हैं, तो वहाँ पे रेंट करना आई थिंक कंपैरेटिवली इट्स मच ईजियर। पर यहाँ पे रेंटिंग के लिए स्पेशली जो लोग नए आते हैं उनके पास सारे जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। और अब क्या जो है नया ट्रेंड है रेंटिंग में, और आप लैंडलॉर्ड के थ्रू रेंट करें या आप एजेंट के थ्रू रेंट करें, आप कैसे डायरेक्ट कंपनी से रेंट करें, तो सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है, सो दैट ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स के उन्हें थोड़ा एक आइडिया हो कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आप कब यूके आए थे, हाउ लाइफ हैज़ बीन फॉर यू इन द यूके। It's been a long story, but I'll try to summarize it. मैं यहाँ पर आया 2006 में. And so it's been a very long it's time. been a long time, Yeah, almost 18 years passed now. Exactly. I came on my own. University of Central Lancashire में आया था मैं अपनी पढ़ाई करने. पढ़ाई करी, उसके बाद PSW करा, then I started working in hotels. So I started from a very basic level job, but alhamdulillah I got into a sponsorship. So a company sponsored me. I stayed with them for a very long time. Since then I've been growing into the property sector. So from there hotels I moved to students, because students is a big market in UK. So I went into student accommodations. Then I've moved into a new market called build to rent. So I've actually moved towards the latest trend of renting. So I work in that industry as a general community manager. So I look after some schemes. That's really impressive. तो ये build to rent जो है, ये I think मतलब नया कंसेप्ट है, क्योंकि जब मैं आया था सबसे पहले जो मैंने जो है डायरेक्ट एजेंट के थ्रू जो है रेंट किया था, और ऑब्वियसली उसमें यू एंड अप पेइंग एजेंट की फीस which is not like a very minimal amount, but it's like a very handsome amount. तो बिल्ड टू रेंट क्या चीज़ है? देखो, बिल्ड टू रेंट समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल रेंटिंग एंड बिल्ड टू रेंटिंग. व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड जो कि अभी चल रहा है? तो दो चीज़ें हैं. एक है ट्रेडिशनल रेंटिंग के आपने घर ढूंढा कहीं वेबसाइट पे कि ये घर अवेलेबल है, यू गो थ्रू द एजेंट, यू आर लिटरली इन अ विशियस सर्कल. एजेंट से समथिंग, legally you don't have some time, stand on it. Whatever the contract is, you're not sure. But when you come to build to rent, it's a completely new concept. It's been in America for very long, but towards Europe, UK and all the other world, it's a new concept. The basic purpose of build to rent is bringing a community together. अच्छा. To build a soulful community. So you think, you're coming from India as a professional. You're going through the agents, landlords, you don't know who's genuine, who's not genuine. आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, what documents are you providing, where is your ID being taken or not. अब build to rent में क्या है कि these properties are built by institutional investors. So they built a massive property. In that property, it's not for sale. None of the apartments are for sale. It is purely a rental community they are building. उसके बहुत से benefits हैं on both sides. There is sometime agent involved, sometime an agent is not involved. Basically there is a side team. There are so many benefits. These buildings are made with so much latest technologies. So if you go in traditional renting, you might get a house which is 100-year-old, 80-year-old, 70 years old, which is average in UK. लेकिन these build to rent, because it's a new concept, आपको latest build मिलता है.
उन लेटेस्ट बिल्ड में आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, यू गॉट स्मार्ट हीटिंग्स इन सम ऑफ देम, यू गॉट मेंटेनेंस एट योर डोर स्टेप. ट्रेडिशनल रेंटिंग में आपके पास मेंटेनेंस का ऑप्शन नहीं होता है, बहुत से लैंडलॉर्ड्स देते हैं बट इट्स अ हिट एंड मिस. बट ओवर हियर देयर इज अ साइड टीम, कुछ भी हुआ यू गॉट एन ऐप, आपने उनको कॉन्टैक्ट करा, दे केम स्ट्रेट टू योर अपार्टमेंट, देयर इज एन ऑन साइड टीम हु basically look after that rental community over here. सबसे बड़ा benefit है safety and security. Yeah, exactly. आपकी access सारी secure है, you are all covered by CCTV. उसके बाद आप एक और बड़ा benefit ले लें, for example postal. Yeah. एक example मैं I'll give an example from yesterday. Yeah. Even if you are not in the apartment, your package or your post is not missed. Yeah, exactly. Isn't it? बिल्कुल. Whether it's 11 o'clock in the night or 12 o'clock in the night, you can go down and collect your package. Exactly. That's a service of build to rent. There is no charge of this. Otherwise, if you hire a post box, then you will be paying for it. Over here, the post box comes with it. और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिकॉज शायद जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन यूके में अभी भी ये अपने जो रॉयल मेल है उसको ही यूज़ करते हैं, इवन फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या इवन फॉर योर काउंसिल टैक्स एंड एवरीथिंग, वाईफाई, वाटर, सारे बिल्स जो हैं वो आपके पास एज अ पोस्ट ही आते हैं. इनफैक्ट आपकी सैलरी की पे स्लिप भी आप यू कैन व्यू इट ऑनलाइन बट इट कम्स एज अ हार्ड कॉपी टू योर पोस्ट. तो पोस्ट का रिवाज यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा है. दे हैव मेंटेन देयर सिस्टम जो पहले से है, तो ये एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है. और स्पेशली ऑल द डिलीवरीज एंड अमेजोन एंड एवरीथिंग यू जस्ट गेट थ्रू टू योर कॉन्सियर्ज और टू डायरेक्टली टू योर अपार्टमेंट. That's it. You literally summarized. Yeah. There is the build to rent comes with a service which provides you hassle-free living. That's the concept. But at the same time, you're building community. I imagine करें, you've left your country, you've come here first time. You don't know anyone. आप किसी को नहीं जानते. But there are community events within that property. जो भी managing agent होते हैं, जो staff होते हैं, वो every 2-3 weeks different events रखते हैं. And you attend them free of cost. And then you get to meet all your neighbors living in the apartment. You make friends, you go out, and that's how you build a community. Exactly. Isn't it? You don't have anyone when you come to these properties, but when you start living over here, you start knowing the world around you. You start making friends, you start making connections, you then socialize, and that's how the community grows. बिल्कुल. और एक चीज़ जो है जो मेरे दिमाग में आती है, because when I rented initially, तो obviously when you're coming from a different country, आपको यहाँ के लोगों का mindset नहीं पता होता है. और जब मैंने पहली बार रेंट किया था तो I rented through an agent, और उस टाइम पे एजेंट के साथ जो है नेगोशिएट करना it was like very difficult for me. तो इस चीज़ में as you mentioned, I think कि एजेंट्स नहीं होते हैं मोस्टली, और अगर होते भी हैं तो what advice या what tips कोई ऐसी हैं जो आप देंगे उन लोगों को जब शायद पहली बार रेंट कर रहे हैं, तो how to negotiate with an agent, या मतलब किस तरह से जो है they can get a fair price for the apartment. Build to rent की यही एक खूबी है, and this is one of the best parts, that there is no sort of negotiation. It's fair priced. These companies do market research. वो market research करती हैं कि क्या rental है पूरे areas का, demographic का, what's the market like. Then they decide what is the best rent for this property, or what is the best suited rent for a 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom or a studio. तो इतनी ज़्यादा negotiation नहीं होती है, but there are sometimes incentives. For example, November, December time, when the market is very low, you might get some incentives. So it's always good to ask for some offers, like is there any refer a friend scheme going on. Okay. You might get some refer a friend vouchers or bonus like that. Sometimes there are rent free periods as well, so it's good to inquire if there is any rent free periods. तो इसके बारे में आज पूछ सकते हैं. Also 2-3 चीज़ें बहुत important है पूछने के लिए when you book through the agents or you book directly. If there is a break clause, कि ब्रेक क्लॉज है आपकी टेनेंसी में नहीं है. सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, क्योंकि ब्रेक क्लॉज जो है वो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं आया, बिकॉज इट्स सच अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी. तो इसको आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि व्हाट इज ब्रेक क्लॉज. बहुत सी टेनेंसीज जो होती हैं वो ब्रेक क्लॉज अलाउ करती हैं और बहुत सी नहीं भी करती हैं. इट्स लैंडलॉर्ड डिपेंडेंट, बट इट्स नो हार्म इन आस्किंग. सम टाइम व्हेन यू आस्क यू गेट इट. अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं. तो इसलिए अच्छा है कि आप पूछे कि इज देयर एनी ऑप्शन फॉर ब्रेक क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल की टेनेंसी साइन करी, बट इफ़ यू हैव अ ब्रेक क्लॉज ऑफ 6 months, तो ज़्यादातर टेनेंसीज में क्या होता है कि एट 4th month अगर आपकी चीज़ें नहीं
आपकी सेटल हुई जैसे आप चाहते थे, at fourth month you have an option that you want to break your tenancy at the 6th month. So you gave a notice of 2 months. At fourth month that I want to break the clause, use the clause and break the tenancy at 6 months. So that would be classed as a 6-month break clause in the tenancy. Okay. तो इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. Okay. और इसमें ऐसा तो नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक क्लॉज, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे इस अपार्टमेंट में 1 साल तक रहना है, बट फिर भी बिकॉज जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन मैं 6 मंथ्स का ब्रेक क्लॉज लेता हूँ, तो उसके बाद 6 मंथ्स बाद जो मेरा लैंडलॉर्ड है या मेरी जो कंपनी है वो मेरा रेंट बढ़ा दे बिकॉज यू नो देयर इज अ ब्रेक क्लॉज. क्या ऐसा नहीं, टेनेंसी तो आपने 1 साल की ही साइन करी है ना. आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो 1 साल का है. दैट इज जस्ट अ ब्रेक क्लॉज. दैट डजंट डिफाइन योर रेंट पीरियड और द रेंट इंक्रीज. हाउएवर जब आपका 1 साल का टेनेंसी हो जाता है तो देयर इज ऑलवेज रेंट एप्रिसिएशन. आप यू शुड एक्सपेक्ट कि 1 साल के बाद रेंट बढ़े. कितना रेंट यूजुअली बढ़ता है? Again depend on landlords, but and depends on the market as well. अगर market boom कर रही है या market बिल्कुल recession में जा रही है, उसके हिसाब से rents decide होते हैं. But on an average you should expect at least 5%. 5%. Okay. That's minimum you should expect. एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नो why did I ask you about that break clause thing कि landlords जो हैं वो increase तो नहीं कर सकते rent because the same incident happened with me. I was initially renting in London और वहाँ पे जो मेरे landlord ने after 6 months he said that he'll be increasing my rent which was like by about maybe 10% or something because his installments were going up, interest rate because of the increase in the interest rate. लेकिन फिर मुझे I contacted Salman भैया and I contacted someone else as well. तो फिर मैंने जो है अपने लैंडलॉर्ड को UKVI not exactly UKVI but UK गवर्नमेंट की वेबसाइट से एक जो है स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें ये क्लियरली मेंशन था दैट रेंट जो है दैट कैन बी इंक्रीज आफ्टर योर टेनेंसी पीरियड एंड्स नॉट आफ्टर योर ब्रेक क्लॉज एंड्स. यस, एंड आपको उसमें उसको टेनेंट को लैंडलॉर्ड को आपको नोटिस भी देना होगा. And you know every single help is available on gov.uk. Every single question you got in mind about your tenancy, every single scenario, they're all present on there. तो आप इस पर खूब रिसर्च करें. और इंटरनेशनल लोगों को मैं यही बोलूँगा कि गो टूवर्ड्स द लेटेस्ट ट्रेंड विच इज़ बिल्ड टू रेंट. अनदर एग्जांपल, अमेनिटी स्पेसेस. कितनी अमेनिटी स्पेसेस मिलती हैं इन बिल्ड टू रेंट बिल्डिंग. फॉर एग्जांपल बहुत से जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं बिल्ड टू रेंट, you get cinema rooms, you get private dining rooms, you get games room, you get roof terraces, you also get events like you've got a gym in there. In the gym you also get a personal trainer on house. Every 2 weeks personal trainer comes, you know, you can attend the classes over there. To keep the kids busy, there are coloring classes, pottery classes. For all the parents who are staying at home, there are cooking classes. You know, again building the community together, but it's all inclusive in your rent. So you're not paying anything extra. Yeah, like there's something for everyone. That's every member of the family. और जहाँ तक हम पैसों की बात करें तो obviously जैसे आपने पहले बताया and जिस कंपनी में आप हैं आई चेक द वेबसाइट और उस पर उन्होंने कंपनी पे ही वेबसाइट पे ही आपको रेंट लाइक 1 bedroom 2 bedroom के रेट्स दिए हुए हैं. तो उसमें जो आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एन एजेंट के लैंडलॉर्ड तो उसमें वो जो एक आपको लगता है कि पता नहीं ही you know charging me like the justified amount, तो वो वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल. रेंट्स बहुत क्लैरिटी होती है. you get a transparent picture what the rent is. और मैं अपनी कंपनी की तो नहीं बात करूँगा बिकॉज इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट देर आर लोकल वेबसाइट्स लाइक राइटमूव, ज़ूपला. सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 99.99% of the companies list their properties, including the build to rent properties, on these websites. You can actually go and compare the market over there and the amenities what you're getting in those rents. आपको खुद समझ में आएगा कि the latest trend is now build to rent, co-living, or living into the properties where you're building the community rather than having an individual traditional rented property. और एक चीज़ जो है फॉर एग्जांपल अगर हम एक 1 bedroom हाउस की बात करते हैं विच इज़ लाइक अ न्यू बिल्ड टू रेंट और उसमें आप 1 bedroom का इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल पेइंग £1,000 पर मंथ एज अ रेंट, तो उसमें जो आपकी और चीज़ें लाइक योर वाईफाई, योर इलेक्ट्रिसिटी, योर काउंसिल टैक्स, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं या वेदर दे आर यू नो सेपरेट? Depending on landlords, but
mainly you bear your own bills. Some properties provide you Wi-Fi included. Some would say 6 months included, or some would actually provide you Wi-Fi on the house. Okay. Communal areas के Wi-Fi free होते हैं ज़्यादातर, but you would bear the bills. So utility bills, mainly your, if there is gas, then gas, also electricity, water, and your council tax. As a student अगर आप आते हो तो you actually get the council tax rebate. Okay. So if you are coming here as a student, you should know that आपके लिए council tax माफ होता है. तो जब आप यहाँ पर आ जाएं तो your university will give you a letter. You send that letter to council, and council will send you a £0 bill. Okay. You get that as a waiver. Okay. और ये जो है बिल टू रेंट है, या जब भी आप जो है just before we move on that, council tax पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि if you are a single renter, then you also get 25% discount. Okay. तो Yeah. बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, and they keep paying the council tax in full. But depending on council, like Birmingham Council, you get 25% discount if you are a single person living in the house. So you let council know, and they'll give you 25% discount. I think ये चीज़ शायद सभी जगह है, मतलब most of the cities में तो है, क्योंकि लंदन में भी initially it was like that. Actually, this reminds me, I have to check my council tax because I think I'm paying it in full, so I'll have to apply for the 25% discount. बातों से ही बातें निकलती हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे ये आप जब भी अपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया हूँ और मुझे एक अपार्टमेंट रेंट करना है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? और यूजुअली बिकॉज दे आस्क फॉर योर, आई थिंक, चलिए पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स. देखो, मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ. यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम बहुत चेक करते हैं. एक आपकी लीगैलिटी, एक आपकी अफोर्डेबिलिटी, एक इफ़ यू हैव अ गारंटोर. तो 2-3 बेसिक्स हैं यहाँ पे प्रोफेशनल रेंटिंग में, या बिल्ड टू रेंट रेंटिंग में आई शुड से, कि फर्स्ट यू शुड हैव द लीगल राइट टू रेंट. तो जब आप अपनी एप्लीकेशन दोगे तो वी विल आल्सो चेक दैट डू यू एक्चुअली हैव द लीगल राइट टू रेंट इन यूके. इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये आप कैसे चेक करेंगे? ये इसका प्रोसेस ऐसे होता है कि आप जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स दोगे, विच एवर योर राइट टू रेंट इज. डू यू मीन लाइक आवर वीजा? Yes. Or So right to stay in the country. Right to stay in the country and right to rent in the country. For example, visitor visa पे तो 1 साल की टेनेंसी कोई नहीं देगा ना. Exactly. So आप अपना जब BRP दोगे, BRP नहीं देंगे आप. So what will you do is you will actually go on gov.uk website and you will basically get a share code for right to rent. Okay. You will provide that share code to the managing company. तो फिर हम उस शेयर कोड से जाकर चेक करेंगे. That will basically download as a document which tells us that whether you have a right to rent in UK or not, and how long you have the right to rent. Okay. That's one of the things which we check. तो BRP नहीं देना है, मतलब अगर आपसे कोई BRP मांगे तो आपको बिल्कुल नहीं देना है. पासपोर्ट की कॉपी जरूर देनी होगी as a legality. वो भी कॉपी देनी है. हाँ, some companies might ask you for a BRP as well, just to see what visa you are on or what's your status. But share code is the biggest thing. Okay. Same with the employment as well. आप उसमें भी शेयर कोड देते हो. कोड ही देते हैं, बिल्कुल जी. हमारे पास जब आपका राइट टू रेंट आ जाएगा, देन सेकंड थिंग होती है अफोर्डेबिलिटी चेक. तो उसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपनीज हायर करती हैं थर्ड पार्टी कंपनी जो रेफरेंसिंग करती हैं. तो उस रेफरेंसिंग में बहुत सी चीज़ें चेक होती हैं. पहले आपका चेक होता है अफोर्डेबिलिटी. मैं एवरेज बता रहा हूँ, कुछ कंपनीज का कम भी होता है, कुछ कंपनीज का ज़्यादा भी होता है. रूल ऑफ थंब जो है वो है यहाँ पर कि अगर आपका रेंट फॉर एग्जांपल £1000 है, तो आपकी एनुअल इनकम एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइम्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप £1000 रेंट का अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, अ कंपनी वुड रफली एक्सपेक्ट कि आपकी इनकम हो अबाउट 30,000 पर ईयर पर एनम. तो ये एक जनरल रूल होता है. कुछ की कम भी होती है, कुछ की ज़्यादा भी होती है क्राइटेरिया. बट देन यू हैव टू प्रूव द डॉक्यूमेंट्स. यू हैव टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स, प्रूव वॉट एवर योर इनकम इज़. फिर आपका एक लीगल चेक होता है वेदर देयर आर एनी काउंटी कोर्ट जजमेंट्स ऑन यू और नॉट. व्हाट्स योर स्टेटस, इज देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और नॉट. एंड थर्ड आपका एम्प्लॉयमेंट चेक भी होगा आपके एम्प्लॉयर से. एंड देन in some cases, for example, if you are paying monthly,
we will need a guarantor who should be a UK resident, and again they should meet the affordability criteria as well. अच्छा, ये चीज़ जो है ये आज तक मेरे साथ नहीं हुई है. सो इज इट लाइक मैंडेटरी फॉर ऑल रेंटिंग? No, it's not mandatory for all renting. Again, different companies, different companies, criteria. But generally, for example, अगर आप 1 साल के लिए अपार्टमेंट ले रहे हैं, you pay in full, पूरे 12 महीने का रेंट दे दिया, तो most of the countries won't ask you for a guarantor. Or even if you are just paying monthly and you fulfill all the criteria as affordability, they might not ask you. But if you are not fulfilling the affordability, they might ask you for a guarantor who fulfills the affordability criteria. But guarantor responsibility is quite heavy. So if anyone signs for a guarantor, they need to understand कि अगर tenant pay नहीं करता है तो guarantor को ही pay करना पड़ेगा rent. Guarantor is liable to a court action. Okay, all right. तो ये तो हो गए कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेंटिंग. और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू रेंटिंग, बट कुछ भी जनरल टिप्स स्पेशली फॉर दोज हु आर न्यू इन द यूके या हु आर प्लानिंग टू कम टू द यूके. तो कैसे, फॉर एग्जांपल प्रोसेस बहुत सिंपल है. प्रोसेस बहुत सिंपल है. आप जाइए वेबसाइट्स लाइक राइटमूव, ज़ूपला, ये मैंने बताया, आप प्रॉपर्टी ढूंढिए, आप उन पे नंबर्स होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, हाउ मच डू यू अर्न. तो आप उसको ऐसा नहीं समझिए कि मेरे से बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या झूठ नहीं बोलिए, उनको बिल्कुल सच बताइए, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके रेफरेंस चेक में जाएंगे, और वहाँ पर अगर वो फाइंड आउट करेंगे कि ये गलत है, देन यू विल फेल दोज रेफरेंस चेक. तो मेक श्योर करें कि आप हर चीज़ सच बताएं. जब आपका रेफरेंस पास हो जाएगा तो लोग ज़्यादातर होल्डिंग डिपॉजिट भी पे करते हैं कि सो दैट दिस फ्लैट डजंट गो अंटिल द रेफरेंस आर डन. तो आप रेफरेंस होने से पहले होल्डिंग डिपॉजिट दे सकते हैं, सो दैट फ्लैट इज और अपार्टमेंट इज टेकन ऑफ द मार्केट. जब आपका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, देन यू फॉलो द फुल प्रोसेस थ्रू. आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. मूव इन होने से पहले आपके अपार्टमेंट की इन्वेंट्री होगी, वो इन्वेंट्री करके आपको भेजेंगे. देन अगेन दिस इज अ बेनिफिट बिकॉज यू आर रेंटिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल कंपनी रादर देन एन इंडिविजुअल ट्रेडिशनल टेनेंट. तो पूरी इन्वेंट्री में आपका अपार्टमेंट चेक आएगा. You get the chance as well to go and check that inventory within 7 days and say actually you said there was no mark on the wall, लेकिन यहाँ पे तो mark है, तो you basically give all of that. Meter readings exchange होती हैं उस पे कि जब आपने अपार्टमेंट लिया तो मीटर रीडिंग इतनी थी. So सारी चेक्स ये होंगे, वो आपको भेजा जाएगा. When you come in, they welcome you. There are welcome boxes in the apartments. They will make sure apartments are fully clean. All legal checks are done. Fire checks are done. Fire alarms are installed. Fire doors are all okay. Paint work is all good. तो ये सारा करेंगे. उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कम्युनिटी बिल्डिंग में. आप मूव इन हो गए, स्टाफ आपसे हर 2-3 दिन के बाद मेक श्योर करेगा whether you are happy or not, is there anything they could do. There is someone to answer your questions all the time. That's what you do not get in traditional renting. And then your journey continues. अगर आपको फिर से रिन्यू करनी है लीज, तो एटलीस्ट 2 months पहले आपको कंपनी पूछेगी कि would you like to extend your tenancy, these are the terms. Then you can discuss with the company as well, this is what I want to do, or change the apartments, or if you want to leave as well, they'll give you a leaving procedure as well. Okay, all right. तो ये सब जो आपने बातें बताई हैं ये तो बहुत ही यूज़फुल हैं, बिकॉज इनिशियली मैंने भी ये 2-2.5 साल में जाके सीखी हैं, और अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले कभी फेस नहीं करी, और जब आप आते हैं तो एटलीस्ट इफ़ यू हैव सम नॉलेज बिफोर हैंड, तो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल. एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अपनी रिसर्च करें. जैसे कि आप घूमने जाते हैं तो आप चेक करते हैं गूगल व्यूज़ या ट्रिप एडवाइज़र. तो ये जो बिल्ड टू रेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका ट्रिप एडवाइज़र आप समझ लीजिए वो होता है एक वेबसाइट होम व्यूज़. ओके, तो आप होम व्यूज़ पे जाएं और जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसका नाम डाल के सर्च करिए. यू विल गेट टू नो द वेरीफाइड रिव्यूज़. ओके, तो उसमें क्या होता है कि होम व्यूज़ में यू विल क्लियरली नो विच आर वेरीफाइड रिव्यूज़ फ्रॉम द रेजिडेंट्स लिविंग इन द बिल्डिंग. होम व्यूज़ पे जब आप रिव्यू एक टेनेंट डालता है, दे हैव टू प्रूव देयर आईडी दैट दे आर लिविंग इन देयर. सो यू एक्चुअली गेट वेरीफाइड रिव्यूज़ फॉर दैट. उस पर जाके पढ़िए, उस पर देखिए उस प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या हो रहा है. आई थिंक दैट इज समथिंग रियली हेल्पफुल, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में, बिकॉज आपको कुछ रहने का नहीं मिल रहा है, आप जल्दबाजी में जो है ले लेते हैं चीज़ें, एंड देन आफ्टर अ मंथ और 2 यू रिग्रेट के यहाँ पे ये भी परेशानी है, वो भी है, बट अंटिल यू हैव अ ब्रेक क्लॉज या अंटिल आपकी टेनेंसी फिनिश नहीं हो रही है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट.
तो नहीं। और अच्छा एक चीज़ और, जो आपका डिपॉजिट होता है तो उसका भी आई थिंक कोई रूल है कि दी लैंडलॉर्ड और द कंपनी हैज़ टू रिटर्न योर डिपॉजिट विद इन सर्टन नंबर ऑफ डेज वंस योर टेनेंसी एंड्स। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि स्पेशली विद लैंडलॉर्ड्स एंड एजेंट्स के वो डिपॉजिट वापस करने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ देखें, अगेन ट्रेडिशनल रेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि देर इज़ नो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस समटाइम्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर टाइम ऐसा होता है, लेकिन समटाइम्स जहाँ आप परेशानी की, जैसे आपने बात करी, जैसे आपने भी फेस करा था पहले, उसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है अगर इफ़ यू डोंट कीप अ ट्रेल और एनीथिंग। लेकिन ओवर हियर देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एवरीथिंग। व्हेन यू वर गिवन द प्रॉपर्टी यू हैड द फुल इन्वेंट्री। डिपॉजिट इज बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन आपने सारे बिल्स पे करे हैं या अगर आपने कोई डैमेज करा है या नहीं करा है। दो तरीके की ऑप्शंस आने लगे हैं अब डिपॉजिट में। एक होता है TDS, द ट्रेडिशनल डिपॉजिट स्कीम। उसमें क्या करना होता है, जब आप अपना डिपॉजिट पे करते हैं, वेदर इट्स 4 weeks or 5 weeks of rent, that deposit gets registered with the government and you will get your own ID. The tenant should be providing you the landlord or the managing company should be providing you with an ID for your TDS. That is your ID for the deposit. जब आपकी टेनेंसी ख़त्म होती है then you basically request for the deposit using that ID and login details. वो आपको लैंडलॉर्ड चैलेंज कर सकता है कि नहीं आपने इतना डैमेज करा था और प्रूव वो उस पर अपलोड करेगा। देन दैट TDS स्कीम, द टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम, विल डिसाइड हु बेसिकली विंस और नॉट एंड दे रिलीज द डिपॉजिट अकॉर्डिंगली, है ना। एक और स्कीम आती है, वो बहुत सी कंपनीज ऑफर करती हैं, दैट इज़ नो डिपॉजिट स्कीम। उसमें आपको डिपॉजिट नहीं देना होता है, तो बहुत सी कंपनीज आपसे 1 week का रेंट चार्ज करेंगी, बट दे गिव यू लाइक a policy or protect you. You basically have to have a clean record and everything, so you don't have to pay the 4 or 5 weeks of rent as a deposit. You just pay 1 week, which is non-refundable. So the traditional deposit scheme is refundable if everything is okay, but the other one, you just pay 1 week's worth of rent or whatever the fees is, and that serves you as a policy that protects you basically. All right. Yeah. So I think बहुत सारी ज़रूरी बातें जो हैं आज हमने इसमें सुनी है। लेकिन अगर आप लाइक बिफोर वी रैप अप द सेशन, उससे पहले 30 सेकेंड्स में अगर आप बहुत की पॉइंट्स जो हैं शुरू से लेकर आखिर तक कुछ समराइज़ करना चाहें, और कि कोई अगर पूरी वीडियो ना देखना चाहे, और कुछ सिर्फ कि टेक होम मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या टेक होम मैसेज ये है कि किसी स्कैम में ना फंसें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ल्ड में हर जगह पे बहुत से स्कैम्स हैं। अपनी रिसर्च करें, ऑथेंटिसिटी चेक करें उस प्रॉपर्टी की। फेसबुक पे आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक गलत है, लेकिन उन स्कैम्स से बचिए। राइट वेबसाइट्स पे जाइए, करेक्ट वेबसाइट्स पे, वहाँ से प्रॉपर्टी सर्च करिए, स्पीक टू ए ह्यूमन पर्सन। ट्राई इफ़ यू आर फार अवे, वीडियो व्यूइंग्स आर अवेलेबल दीज डेज। व्हाट्सएप पे आप व्यूइंग कर सकते हैं, अपना अपार्टमेंट देखिए, उस पर रिव्यूज़ पढ़िए, जैसे मैंने बताया वेरीफाइड रिव्यूज़ पढ़िए, एंड हैव ए वेरी क्लियर एंड जेन्युइन कन्वर्सेशन। जब आप अपने आंसर्स दें उन क्वेश्चंस के जो रेफरेंसिंग में जाएंगे, मेक श्योर यू गिव द जेन्युइन आंसर्स बिकॉज दोज विल बी क्रॉस चेक्ड। उसमें बहुत से लोग फेल कर जाते हैं, देन यू नो दे आर ट्राइंग टू हाइप देयर इनकम और डोंट ट्राइंग नॉट टू शो एनी काउंटी कोर्ट जजमेंट्स और एनीथिंग। इट एक्चुअली वर्क्स इन योर फेवर अगर आप सारा कुछ सच बोलते हैं, बिकॉज इफ इट समथिंग कम्स बैक यू हैव गॉट ए स्टैंड दैट आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस। तो आप ये चीज़ मेक श्योर करिए। एंड लाइक मैंने कहा कि शेयर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कभी कभी राइट टू वर्क मांगते हैं, सम टाइम पीपल सेंड देयर यूटिलिटी बिल, सम टाइम पीपल सेंड दिस एंड देयर इज समटाइम्स कन्फ्यूजन। वी आर आस्किंग फॉर अ शेयर कोड। एक इंटरनेशनल के लिए बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट द BRP यू कैन ओनली गेट द वीज़ा द एंट्री क्लियरेंस। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं देन यू गेट अ मंथ टू कलेक्ट योर BRP, देन यू बेसिकली गेट योर शेयर कोड। वो आप प्रोवाइड करिए कंपनी को, क्योंकि अगर आप पहले एंट्री क्लियरेंस वाले पे राइट टू वर्क का शेयर कोड निकाल के देंगे तो दैट्स ओनली वैलिड फॉर 1 month, isn't it? Then exactly, that's a very when good point. even if you provide that, please make it very clear to a property company कि ये 1 month का share code है, because I've only got the entry clearance. When I come over there, pick up my BRP, I'll give you another share code which basically proves my right to rent in UK. All right, yeah, I think that's something very important and a very good point you made there.
All right. Thank you so much for joining Not us, a and thank you problem. for sharing your experience. No, thank you for having me. No, thanks a lot. All right. So उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जो है information बहुत helpful रहेगी. And if you have any doubts regarding renting, you can always pop down in the comments below, and we will be happy to get back to you. Thank you. Thank you for watching. Thank you.